Good evening, everyone. I'm Dr. Maunika, a medical advisor from Shield Healthcare. I welcome you all for today's session with the icons in conversation with Dr. Ritu. And our topic would be thyroid disorders, public awareness. I would like to welcome our dear speaker, Dr. Ritu Santwani, ma'am. She's an MBBS, MD, FICOG, FIAOG, AMRCOG. She's an obstetrician and gynecologist, IVF, founder and CEO 360 Degrees Healthcare Studio, infertility specialist, NUHS Singapore, co-founder MAM board member of SWWC. I welcome you, ma'am. I hand over this session to you. Yeah, thank you, Monica. Friends, as we all know, that thyroid is a very common problem. Daily in our OPD, we are getting a lot of patients with the thyroid, and each and everyone is having a lot of queries. So that's why I decided that today I will do this session basically for the public awareness on the thyroid issues. So I have made my slide very simple, so that will be easily understandable by all of you. I will keep my talk mostly in English because I have received a lot of comments last time from some local people from the other countries that, madam, you are speaking a lot of Hindi, so we are not getting the point. So I will try to take this English and some important points. Of course, I will share in Hindi too. Yeah. So yeah, I will just share my screen. Not visible, no? No, ma'am, slides are not visible. Not visible. Wait, I will share again then. What happened? I just checked. Hi, Dr. Rajeshri. Hi. Thank you for joining. Yes. Thank you. I'm just discussing that today our program is mostly focused for the public awareness. So I'm going to show the slides I made very easy slides. So after that, now my dear friend Dr. Rajeshri is there. So after that, we can discuss something on what is the common questions we are getting. Rajeshri, after the Sunday webinar, I got some Yes. good quotes from the Philippines also. Huh? Yes. Good. Very much up. They specifically told that first two talks are very nice. So, congratulations. Congratulations to you too. So today, because I got a lot of requests that, madam, please keep most of the conversation in English. So mostly I will speak in English, and later on we will discuss in Hindi for our people also. Yes. Yeah. Just sharing. I don't know what's the problem, why it is not sharing. Yeah. I think now the slides are visible. Yes. Yeah. So Rajeshri, in between also you can give your expert opinion, not a problem. You and me are the same. Yeah. So I'm starting yeah. So friends, we are going to discuss regarding about this thyroid disease. So as we all know, my main data is being focused on this thyroid, about the statistics, what in the India it is showing. So thyroid disorders are rising in India. 1 in 10 Indians suffer from the thyroid disorders. Symptoms of thyroid disease are commonly confused with those other diseases, hence left untreated. So now, what are the most common symptoms with which the patients usually present? Either often very feeling of the tiredness, weight gain, menstrual irregularities. With this, usually the patient presents, as the hypothyroidism is more common. So now knowing about the thyroid gland. A thyroid gland is usually a butterfly-shaped endocrine gland located in the front of the neck, and its main job to produce the thyroid hormones. It is the chemicals that carry the messages from organs to your body, to your cells, and helps in the regulation of the body functions.
So we all know it produces two hormones, the T4 and T3, and the role of these hormones is a help in the growth and development, regulation of the body temperature, assisting the body organs in their functions. So when thyroid gland does not work properly, it causes the two disorders, either the hypo or the hyperthyroidism. So we will discuss one by one. I make the slide very short and up to the point only. So it will be very easily understandable to the layman also. So a condition in which the thyroid gland cannot produce the enough thyroid hormones to keep the body functioning normally. So usually the 4 to 10% of the general population and 20% of the women over the 60 years may have the hypothyroidism. Ratio of thyroid disorders is 8:2 in men and in women and men. So we can see the disease is more prevalent in the females, and and we are daily seeing in our OPD the patients of the thyroid. So these are the some symptoms. Yes, unexplained weight gain, tiredness, hair loss, dry skin, and depression. These are the usual symptoms of the patients present. Menstrual irregularities, infertility or difficulty in conception, swelling in the legs, and drop in the heart rate. So usually the patients are coming, once the patients are coming to us with the infertility, of course, we are doing the TSH testing is must in our profile. While in the case of the hyperthyroidism, when the gland is producing the too much of the hormones, it can develop at any age in men and women, but most commonly occurs in the woman and begins after the 20 years of age. So the symptoms of the hyperthyroidism are usually the increased bowel movements, weight loss, tremor, persistent sore or dry throat, and excessive sweating. These are the some common presentations. Rapid heart rate, warm and moist palms, difficulty in sleeping. So many patients we are seeing in our OPD, ladies are coming that they are having the warm and moist palms and difficulty in sleeping. Tachycardia, we are seeing surgical removal of the part or the all of the thyroid gland, any disease affecting the thyroid gland or the inflammation of the thyroid gland. So who are at the risk of these thyroid disorders? Those statistics suggest the women over the age of the 50, but these days we are seeing a lot of youngsters also are coming in our OPD and suffering from the thyroid, surgery of the thyroid gland, family history of thyroid disorders, medication affecting the functioning of the thyroid gland. So symptoms of thyroid disorders, risk factors, and the blood test we know T3, T4, and in some patients we are doing this TPO antibodies too. So medication, friends, so medication for this, what we know and how to balance and how to give, what to decide. So for this, we usually advise for the healthy diet, eating for the whole grains, wheat, rice, corn, fruits like apple, oranges, grapes, dark green leafy vegetables, and not of the cruciferous family, eating of the seafood which contains the iodine, which helps in treating of the hypothyroidism, and using of the healthy cooking oil. Yes, some oils are also available with this fortification. They can use that. And especially, it is very common in our India, especially the northeast belt, in the hilly area, because I have seen a patient of the goiter also. Yes, use of the iodized salt is also very important. These days, what happened is too much of the modernization. Everyone saying I'm using this pink salt, Himalayan salt, or the other salt. So instead of that, because our Indian guidelines what have done the fortification of the salt, so that is also good. So the TSH levels in the blood is 0.45 to 4.5 milli international units per liter. High when above than 4.5, then it is hypothyroidism. Low when it is less than 0.45. So the thyroid diseases affects mainly the body systems and overall the health. So we can see from up to down. So in the brain, the depression, decreased concentration, general lack of interest. In the heart, the decreased heart rate, increased or decreased BP, decreased cardiac output. In the kidneys, decreased function, fluid retention and edema. Reproductive system, decreased fertility, menstrual abnormalities may harm the development of infant. The intestine patients usually present as constipation, decreased GI.
activity in the liver, the LDL increase, cholesterol elevated, and these are the widespread effects by this hypothyroidism. While in the pregnancy, for which we are mostly concerned being gynecologists and obstetrician, because the risk of the frequent miscarriages and 15 to 20% pregnancy loss reported in the first trimester. Then, so for the mother, it's the frequent abortion, PIH, anemia, preterm birth, stillbirth, and excessive bleeding after the childbirth has been reported. While for the fetus, the lower child IQ, death of the fetus or neonate, low oxygen level in the fetus at the time of the delivery, which can lead to death. अभी ये सिम्टम्स जो है मैं कुछ हिंदी और मराठी में डिस्कस करना चाहूंगी, क्योंकि हमारे जो बहुत सारे पेशेंट्स इसी से आते हैं, ऐसे ही प्रेजेंट करते हैं कि उनको एक तो पहली बात तो कंसीव करने को प्रॉब्लम हो रही है, इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम है, बंधत्व है, उनको बच्चा नहीं रुक रहा है। तो कई बार जब हम बाकी टेस्ट करते हैं तो उसमें हमें थायराइड का इशू मालूम पड़ता है। तो उसमें पेशेंट यूजुअली जो आता है उसको माहवारी बराबर नहीं आ रहे, हर महीने के महीने उसको पीरियड नहीं आ रहे हैं, वेट बढ़ता जा रहा है। तो ये कुछ ऐसे कॉमन सिम्टम्स होते हैं, मेंसेस में कुछ डिस्टर्बेंस है। सो अब उसके लिए हमें ट्रीटमेंट करना बहुत जरूरी है। इसी तरह अगर नहीं ट्रीट करेंगे तो जो बच्चा आएगा उसका भी IQ लो होगा, डेथ ऑफ फीटस हो सकती है। सो दीज ऑल वी हैव टू कीप इन द माइंड। अब इसका लेवल कितना होना चाहिए? द नॉर्मल TSH लेवल रेंजेस ड्यूरिंग ईच ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी। In the first trimester, less than 2.5. In the second, less than 3. While in the third, it can be more than 3. So we have a very easy mnemonic for the first less than 2.5, and in second less than 3. While in the third, it can be more than 3. So we can see now this is a comparative chart. I will show quickly the 2-3 slides or more. Then after that we can discuss in the hypothyroidism, the unexplained weight gain. While in hyper is the weight loss, in hypo depression, while hyper excessive sweating, in hypo tiredness, while in hyper increased bowel movement, in hypo hair loss persistent, while in hyper the persistent or sore or dry throat. Hypo is the dry skin, while in hyper the tremors in hand, in hypo irregular menses, while in hyper rapid heart rate, while in hypo problem in conceiving and infertility, while in hyper the warm and moist palms. So for this we usually how we advise the patient to take the medicines properly, that is also very, very important. And as we advise the patient to take the treatment properly for minimum 3 months, after 3 months we are doing this thyroid level checking, and depending on that whether the values are increased or decreased, we are adjusting the dosage. So this is very important. And for this thyroid, one thing is very important, that we always tell the patients to take the tablet properly on the time. So one tablet in the early morning we usually suggest our patients to take, and if they can take that tablet in the fasting sign, so that will be very good. Usually what happens what the pregnant patients are coming to us, they have a habit to take iron, calcium along with this thyroid tablet, so the absorption won't be there. So these are the some points what we have to emphasize our patients. अब हम अपना कुछ डिस्कशन हिंदी और मराठी में शुरू करते हैं। राजश्री, आप कुछ बोलना चाहोगे पहले? हाँ नहीं, अच्छा बताया आपने। वो PPT वाज वेरी गुड। वही इम्पोर्टेंट है कि जो लेडीज का वजन बहुत ऐसा बढ़ रहा है या कम हो रहा है, और महीनेवारी में अगर आपको बहुत ज्यादा जाता है, या कभी समझो हाइपोथायराइडिज्म है तो वो बहुत दिनों के बाद महीना आता है, ये रेगुलर मेंसेस से बच्चा नहीं हो रहा है, या वजन बढ़ता है, इंटरेस्ट लॉस होता है, स्किन ड्राई हो जाती है, तो ये सारी चीजें जो डॉक्टर रितु ने बताई है, अगर ऐसे आपको लगता है तो तुरंत आप डॉक्टर के पास जाइए एंड उनका टेस्ट कर लीजिए। यही मैं, बिकॉज ये लोग बहुत अभी यहाँ पे पब्लिक अवेअरनेस का है, तो मैं मराठी में बोलना चाहती हूँ की जेव्हा जेव्हा तुम्हाला असं वजन खूप वाढलेलं असतं किंवा वजन कमी होतं किंवा तुमचा मूड खूप राग येणं किंवा आपला मूड न लागणं किंवा आपली जी त्वचा असते ती ड्राय होणं किंवा समजा पाळीमध्ये खूप अंगावर जाणं किंवा खूप लांबवर पाळी जाणं, तर या सगळ्या गोष्टी जर तुम्हाला होत असतील तर मग थायरॉइडचे टेस्ट करून घेणं फार गरजेचं आहे।
थायरॉइड हे काही खूप मोठी ऍबनॉर्मॅलिटी नाहीये, कारण जे बॉडीमध्ये आपले थायरॉइडचे हार्मोन्स होतात तेच हार्मोन्स जर समजा कमी प्रमाणात होत असेल, तर जसं डॉक्टर रितूने सांगितलं की एक हायपोचा प्रकार असतो, म्हणजे ज्याच्यात थायरॉइडचे हार्मोन्स कमी झालेले असतात आणि ज्याच्यामध्ये ग्रंथी वाढलेले असतात तर त्या ग्रंथी वाढणाऱ्यांचं जे हायपरथायरॉइडिझम आहे त्याचं प्रमाण तसं कमी आहे, पण कॉमनली आपल्याला सगळ्यामध्ये आपण जर बघितलं तर थायरॉइड हायपोथायरॉइडिझम हा जास्त कॉमन आहे. महिलांमध्ये आहे, जेव्हा त्यांची पाळी मेनोपॉज येतो त्याच्यामध्ये आपण सब क्लिनिकल हायपोथायरॉइडिझम म्हणतो. आणि आजकाल जर आपण बघितलं तर आपण फार असं बैठे हे करतो, म्हणजे सेडेंटरी लाइफ, काम नहीं करते हम लोग बहुत ज्यादा, एक्सरसाइज नहीं है, डाइट में भी बहुत फ्राइड फूड लेते हैं, तो ये सारी चीजों की वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस होता है. तो हमें चेक करके तुरंत उसका सप्लीमेंट लेना चाहिए. तो इनमें बहुत ज्यादा डरने की बात नहीं है. बहुत बार पेशेंट पूछते हैं, अरे हमको बच्चे नहीं होंगे या बच्चे होंगे तो कैसे होंगे, तो ऐसी कोई बात नहीं है. जितना डेफिशिएंसी है अगर उसमें गोलियां ले लिया तो वो लेवल मेंटेन होता है, लेकिन डॉक्टर के सलाह से वो सब कर लेना चाहिए. आई थिंक यही इम्पोर्टेंट है, और अपने मन में ज्यादा चिंता नहीं रखनी चाहिए. और डॉक्टर रितु ने बहुत अच्छी तरह से आपको स्लाइड बना के भी बहुत अच्छी तरह से उन्होंने ये कर दिया. थैंक यू राजश्री. जैसा कि डॉक्टर राजश्री ने भी बताया कि यही 2-3 पॉइंट होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. एक तो जो पहला हम पेशेंट को बोलते हैं कि उनको थायराइड एम्प्टी स्टमक खानी है, जो गोली खानी है. दूसरा, जब थायराइड की गोली जब चालू कर रहे हैं हम पेशेंट को, तो उसको अपने आप से डोज ऊपर नीचे नहीं करना है. जब भी हम पेशेंट को थायराइड की टैबलेट स्टार्ट करते हैं तो हम रेगुलर चेकिंग कराते हैं 3 महीने में, 6 महीने में, उसके हिसाब से हम डोज एडजस्ट करते हैं. और ये गोली ऐसी होती है की इसको आपको मिस नहीं करना है. म्हणजे गोळी चुकायला नाही पाहिजे. अशा नाही की आज तुम्ही सकाळी खाली, उद्या तुम्ही रात्री खातात. तो फूड के साथ इसका एब्जॉर्प्शन नहीं होता है और टैबलेट्स के साथ भी एब्जॉर्प्शन नहीं होता है. तो यूजुअली व्हाट वी ऑलवेज गाइड आवर पेशेंट, क्योंकि कई बार ऐसे भी पेशेंट आते हैं राजेश्री, मैंने बहुत बार देखा है ओपीडी में, कि उनको पता ही नहीं होता है. लोग बोलते हैं हम तो नाश्ते के बाद खाते हैं, तो फिर उनका थायराइड कहाँ से ठीक होगा. और कुछ लोग ऐसे भी आते हैं, मैडम हमें तो डॉक्टर के पास हर बार जाते थे और रिपोर्ट ऊपर नीचे होने पे डॉक्टर ऐसे ही तो मेडिसिन कर दो, वो अपने आप से डोज चेंज कर लेते हैं. वन पेशेंट केम टू मी, शी वाज टेकिंग अर्लियर वाज 75, कल आली तो बोलती कि मैंने अभी 150 अपने आप कर दिया. क्योंकि नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए. तो हम लोग कुछ ऐसे प्रैक्टिकल पॉइंट्स ही डिस्कस करें. मैं अभी अपने और फ्रेंड्स का भी वेलकम करूंगी. डॉक्टर मुनीषा जुड़िए हमारे साथ में, डॉक्टर शालिनी, डॉक्टर उमा देवी, ऑल ऑफ यू आर वेलकम. आप सब भी अपने इनपुट्स दे सकते हैं. ऑल ऑफ यू आर वेलकम. दिस इज अ पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम. हम जन जागृति किस तरह से कर सकते हैं थायराइड के बारे में. और जैसा कि मैंने सॉल्ट के बारे में बताया था, सी आई एम इन द पुणे, आई एम गेटिंग लॉट ऑफ द कॉर्पोरेट क्लाइंट्स. तो सबको क्या लगता है, नहीं मैम हम ये वाला सॉल्ट खाएंगे, वो वाला सॉल्ट खाएंगे, इस सॉल्ट में ये नहीं है, उस सॉल्ट में वो नहीं है. पर जहां पे डेफिशिएंसी है वहां पे तो डेफिनेटली we are advising for the iodized salt, so that will be much better. Iodized salt is available. I am from the government medical college from KGMC. तो जब मैंने अपने रेजिडेंसी के टाइम पे इतने बड़े गोइटर के पेशेंट्स देखे हैं, उस टाइम पे एक फोर्टिफिकेशन प्रोग्राम भी चला था जिसमें बिंदियों में आयोडीन रखा जाता था, कि लेडीज जो वहां से आ रही, कि बिंदी में आयोडीन होता था, कि आयोडीन स्लोली रिलीज होगा. मतलब बहुत ज्यादा याद नहीं है, हल्का सा मुझे याद है. उस टाइम पर भी ऐसा कर रहे थे, क्योंकि और जैसा कि बताया कि सी फूड में होता है, तो अब सी फूड सारे लोग नहीं अफोर्ड कर सकते हमारे यहाँ. तो जो लोग कर सकते हैं, जिनको हाइपोथायराइडिज्म है, उनके लिए दैट इज ऑल्सो वेरी गुड. बहुत सारे ब्रेड्स ऐसे आते हैं जिनमें फोर्टिफिकेशन है, सो दैट आर ऑल्सो वेरी गुड. सारे जो सॉल्ट है तो काफी आयोडाइज है, तो हम लोग वही रिकमेंड करते हैं कि जो आयोडाइज्ड सॉल्ट हो. तो मुझे लगता है कि वो बहुत इम्पोर्टेंट है, कि बहुत बार उनको लगता है कि नहीं अपन कोई नेचुरल इसमें जाए, या डिफरेंट सॉल्ट आपने जैसे बताया हिमालयन, ये वो ब्रांड ने नाम नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन आयोडाइज सॉल्ट लेना बहुत जरूरी है. एंड बच्चों के लिए भी जरूरी है. बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चों का जो ग्रोथ होता है उसके लिए थायराइड हार्मोन्स की बहुत जरूरत लगती है, तो उसके अंदर वो सॉल्ट अच्छा यूज करना बहुत इम्पोर्टेंट है. अगर गले में कभी भी थोड़ा सा इधर स्वेलिंग आया, कुछ बढ़ रहा है, और दूसरी बात ये है कि आवाज में अगर बहुत सारा चेंज हो गया, या दिखने में दिक्कत है, या फिर बहुत जल्दी इरिटेट हो जाते हैं, क्योंकि मेंटल इरिटेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ती है, तो ये सारी चीजों का ध्यान रखना चाहिए. और मुझे लगता है कि अगर
महिलाओं के लिए अगर उनको लगता है तो आप जरूर जाइए, बट लेकिन फैमिली मेंबर्स को भी समझो, घर में बच्चे हैं या हस्बैंड है तो उनको लग रहा होगा कि भाई इनमें कोई चेंज है, तो वो भी बता सकते हैं। दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि मतलब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं ऑलवेज मेरे इसमें ऑलवेज मैं बोलती हूँ कि पूरे घर का ख्याल अगर माँ रखती है तो ये तो वो जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उसमें थोड़ा चेंज आ गया है तो हमें तुरंत उसको बोल के या डॉक्टर को दिखा के उनको ट्रीटमेंट देनी चाहिए। सो इट्स ऑल होल द फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी आल्सो। यस हाँ, दैट्स टोटली करेक्ट कि वैसा करेंगे तो अच्छा रहता है। हमारे साथ डॉक्टर फरा जोड़ी है, या वेलकम डॉक्टर फरा। सो बहुत सारे लोगों में ऐसी ही बहुत सारी भ्रांतियां होती थायराइड से रिलेटेड। एक लोग पूछते हैं कि मैडम जब हम थायराइड की टैबलेट हमें चल रही है तो क्या हम कभी कंसीव नहीं कर पाएंगे, जैसा कि डॉक्टर राजेश ने पॉइंट फोकस भी किया, स्लाइड पे भी मैंने दिखाया था। तो ऐसा नहीं है। थायराइड के अगर हम प्रॉपर कंट्रोल करते हैं तो बहुत सारे पेशेंट्स को वैसा प्रेगनेंसी होती है। हाँ, अब लोग पूछते हैं कि हमने कहीं पे पढ़ा था। एक तो बहुत सारे लोग बहुत सारा अपने आप ही गूगल से निकाल कर ले आते हैं, उसमें वो इसलिए डरे। गूगल डॉक है ना, गूगल हाँ हाँ डॉक्टर है हाँ वो हाँ। तो तो बहुत मुश्किल है। आप जैसे कि पेशेंट पूछती है आज मुझसे कि मैम उसका थायराइड वाज एक्चुअली लेस देन 2.5, कुछ भी ऐसा नहीं था। अर्लियर शी वाज ऑन हाइपोथायराइडिज्म, नाउ इट इज टोटली कंट्रोल्ड। सो कि मैंने कहीं तो पढ़ा था कि थायराइड की वजह से मेरे बच्चे में वो मेंटल डेवलपमेंट नहीं होगा और उसका प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। तो पर अगर थायराइड कंट्रोल में है तो फिर ऐसी कोई घबराने की बात नहीं है कि आपको कुछ ऐसा प्रॉब्लम होगा। हाँ, आपका जो भी ट्रीटमेंट चल रहा है आप डॉक्टर की देखरेख में करिए और प्रॉपर सुपरविजन के अंदर करेंगे, सो दैट विल बी मच मच बेटर। सो ऐसा कोई घबराने की जरूरत नहीं है। बराबर आहे. है ना। तो अभी नाहीये आणि ते खूप महत्वाचं आहे, तर त्याच्यामुळे खूप घाबरू नका की म्हणजे असं थायरॉइड असेल तर मुलं होणार नाहीत किंवा थायरॉइड आहे म्हणून म्हणजे खूप त्रास होईल, तर काही नाहीये. जे तुमच्या शरीरामध्ये जे ग्रंथी निर्माण होतात त्याच्यात कमतरता आलेली ते आपण बाहेरून घ्यायचं. त्याला व्हॉट वी कॉल इज अ एक्सोजेनियस सोर्स, एक्सोजेनियस देते हैं जो बॉडी के अंदर नहीं प्रिपेयर होता है। तो इसीलिए बहुत सारी चिंता मत कीजिए, बट एट द सेम टाइम दवाई लेते लेते कि वजन कंट्रोल में रखना बहुत जरूरी है। एक्सरसाइज करना चाहिए, हो सके तो योगा, प्राणायाम, जुम्बा डांस, कोई भी हो कि जिससे कि शरीर थोड़ा एक्टिव रहे। बिकॉज हाइपोथायराइडिज्म में शरीर में थोड़ा स्थूलता आती है, इसी वजह से यू नीड एक्टिव लाइफ in that. So they should consume the calories and focus on the diet, exercise, meditation and positive attitude. वेरी ट्रू, हो जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इट्स क्वाइट कॉमन। या तो ये जो कुछ जानकारी थी हम लोग देना चाहते थे, तो ये हमने आपके साथ डिस्कस की। अगर इसके अलावा और भी कुछ क्वेरीज रहेंगे तो प्रोग्राम इज गोइंग लाइव ऑन द यूट्यूब, तो आप उस पर लिख सकते हैं। फिर हम लोग जरूर जवाब देने की कोशिश करेंगे आपके क्वेश्चंस का। और फ्रेंड्स, आज का वेबिनार क्योंकि अभी और कोई क्वेश्चंस नहीं आया और दिस इज अ पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम, तो हम अभी वाइंड अप करते हैं। आप लोग में से जो लोग बहुत सारे एकेडमिक लेक्चर और भी सुनना चाहते हैं, तो नाउ अपकमिंग ऑन 5 जुलाई दोपहर 2 से 4:30 के बीच के में मेरा और डॉक्टर राजेश्री का एक लेक्चर रहेगा। So I will be going to speak on ovulation induction on IUI, and Dr. Rajeshri is going to show a very interesting difficult fibroid surgery, what is from the expert's view. So उसमें बहुत सारे अच्छे वीडियोस कलेक्ट किए हैं, बहुत सारे अच्छे स्लाइड्स हैं, and we have applied for the 1 MMC credit point too. We are applying, I am sending tomorrow. So please stay tuned. मैं वो सभी में लिंक पोस्ट कर दूंगी सोशल मीडिया में। सो जो लोग भी चाहते हैं तो वो 5 जुलाई को दोपहर में 2 बजे लॉग इन कर सकते हैं। तो थैंक यू। हाँ, थैंक यू राजेश्री फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू डियर। हाँ, थैंक यू। So thank you friends, those who all have joined. Thank you so much, and thank you Dr. Monica, and thank you my dear Sahiti. अच्छा ठीक है, no problem, है ना। हाँ 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 हाँ, thank you Sahiti dear. So with this we will wind up for today. Yes. Okay friends, bye bye, good night. Good night. Bye.